Hello and good morning. So we are starting with a new video on types of tissues in plants. In this part of the video, this is the first section on plant tissues. In this part of the video, we will be dealing with the simple permanent tissues in plants. As normal, important points are marked in red. Diagrams are also given, so you can note down the important plants and the diagrams for future reference. So let's start with a video on simple permanent tissues in plants. तो ये जो हमारा वीडियो है ये प्लांट टिश्यूज पर है. इसमें हम एक टाइप का टिश्यू डील कर रहे हैं. प्लांट्स में एक टाइप का टिश्यू उसके बारे में डिस्कस करेंगे विच इज सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो जैसा हम नॉर्मली करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दे आर मार्क्ड इन रेड एंड आप डायग्राम्स और इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं आगे रेफरेंस के लिए. Alright, so before we start talking about plant tissues, let's revise what are tissues. Tissues होते क्या हैं? Tissues are a group of closely associated cells that perform related or same functions and are similar in structure. So it means that tissues is more than one or two cells, right? Secondly, they usually have similar kind of structure and they all together collectively perform one or more than one same function. तो टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज एक जैसे सेल्स हैं. पहली बात, स्ट्रक्चर उनका तकरीबन एक जैसा होगा. दूसरा, वो मिल के एक फंक्शन कर रहे हैं, एक काम कुछ कर रहे हैं. ठीक है. और एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सेल्स होंगे, काफी ज्यादा सेल्स होंगे, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा और मिल के एक काम पूरा करेंगे. उनको हम टिश्यूज कहेंगे. ठीक है. प्लांट टिश्यूज जो हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल्स बनाते रहते हैं, और परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. पिछले वाला जो वीडियो था रूट एंड शूट एपेक्स का, उसमें डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे. अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं, लेकिन ये टिश्यूज डिफरेंशिएट हो गए होते हैं. कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए इन्होंने अपना कोई खास स्ट्रक्चर बना लिया होता है और ये डिवाइड नहीं करते. ठीक है. एक खास तरह का शेप साइज हो गया होगा इनका फंक्शन के हिसाब से. अब जैसे ह्यूमन बीइंग में लें तो आई का सेल जो है, आई का टिश्यू जो है उसका एक खास तरह का स्ट्रक्चर होगा. ईयर का जो टिश्यू है उसका खास तरह का स्ट्रक्चर होगा. इसी तरह से प्लांट्स में परमानेंट टिश्यूज ने अपना फंक्शन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लिया होता है और ये डिवाइड नहीं करते. प्लांट्स में दो तरह के परमानेंट टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. हम यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे इस वीडियो में. ओके. सो इन प्लांट्स tissues are broadly or basically classified into two types: meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues simply keep dividing throughout their life and producing new cells. This meristematic tissue portion has been dealt with in previous two videos. We have talked about root apical tissues, shoot apical tissues, intercalary meristems, etc. In this particular video, we will be talking about permanent tissues only. So what are permanent tissues? Permanent tissues are cells which are formed from meristematic cells, but they have changed their shape, size and form according to their function. To perform specific functions, they have changed their form, and secondly, they have stopped dividing. They no longer possess the power to divide and form new cells. Now, in plants, there are two types of permanent tissues: simple permanent tissues and complex permanent tissues. In this particular video, we will be dealing with simple permanent tissues only. So, since we are talking about simple permanent tissues only in this video, let's first see what are simple permanent tissues. Simple permanent tissues are
differentiated cells which work together to perform one function, but they are similar cells. There is only one type of cell in this whole tissue. Sometimes you have different type of cells coming together and performing a single function, but not in simple permanent tissues. In some simple permanent tissue, you have a single type of cell, similar type of cells, but a group of cells coming together, okay, and performing a single function. There are three types of simple permanent tissues normally found in plants: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा सेल्स का एक ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चर में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और मिलके एक काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास दो तीन तरह के सेल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं और मिल के पर वो काम एक काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ सारे सेल्स का स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा, उनका ओरिजिन भी एक ही जगह से हुआ होगा और वो एक ही काम करेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप्स हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। So the first type of simple permanent tissue is parenchyma. It's the most common type of tissue found in plants. These are living cells. This point is important because not all tissues in plant cells are living. Okay, not all tissues in plants are living. Some of them are dead also, but they still perform their function. Parenchyma are living cells which perform their functions, different kind of functions in plants, and they are the most common cells. Right? They have thin walls and they are living. There's a vacuole present. They can have different kind of shapes. They normally store food in these cells. Okay, normally parenchymatous cells, they store food in the form of fats or oils. In certain special plants, they perform specialized functions like gaseous exchange or photosynthesis also. So the main thing is they are living and they are thin walled. Their main function is storage of food material. तो पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स का बना होता है। इनका शेप साइज अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे लिविंग सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स में कई जगह पे आपको डेड सेल्स मिलेंगे लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। पेरेन्काइमा के साथ ऐसा नहीं है। पेरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल्स हैं और ये अपना काम करते हैं। मेन काम इनका होता है कि इनके अंदर फूड स्टोर किया जाता है। कहीं कहीं पे ये दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं लेकिन ज़्यादातर इनके अंदर फूड स्टोर किया जाता है। तो पहली खासियत लिविंग है, दूसरी खासियत थिन वॉल्ड है, तीसरी खासियत इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी होता है। मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड। Okay, so these are pictures of parenchymatous cells. The one on the top of the slide is showing you their cell wall, which is thin, and you can see intercellular spaces. So this is a transverse section. In the lower picture, you are seeing both a TS and a LS, that is a transverse section and a longitudinal section. Okay, the main point to be noted is that they are thin walled, they have spaces in between them, and there is a big vacuole in these cells. तो ये फोटोग्राफ्स है पेरेन्काइमेटस सेल्स की। ऊपर वाला जो पिक्चर है कलर्ड है, उसमें आप देख सकते हैं गोल सेल्स हैं लेकिन इनके बीच में स्पेस बहुत है। दो सेल्स के बीच में हर जगह आपको गैप दिख रहा है। फिर इनका जो सेल वॉल है वो थिन है और इनके अंदर बहुत बड़ा एक वैक्यूल है। नीचे वाले डायग्राम में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी है और ट्रांसवर्स सेक्शन भी है। दोनों का डायग्राम है। ये कलर्ड नहीं है, बाकी फर्क इन दोनों में कुछ भी नहीं है। एक दोनों एक ही सेल के डायग्राम्स हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर्ड है। Hello and good morning. So we are starting with a new video on types of tissues in plants. In this part of the video, this is the first section on the
on plant tissues. In this part of the video, we will be dealing with the simple permanent tissues in plants. As normal, important points are marked in red. Diagrams are also given, so you can note down the important plants and the diagrams for future reference. So let's start with a video on simple permanent tissues in plants. तो ये जो हमारा वीडियो है ये प्लांट टिश्यूज पर है. इसमें हम एक टाइप का टिश्यू डील कर रहे हैं. प्लांट्स में एक टाइप का टिश्यू उसके बारे में डिस्कस करेंगे विच इज सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो जैसा हम नॉर्मली करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दे आर मार्क्ड इन रेड एंड आप डायग्राम्स और इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं आगे रेफरेंस के लिए. Alright, the next type of tissue is Collenchyma. These are elongated cells, meaning their length is more than their breadth. The cell walls are thick compared to Parenchyma and they have tensile strength, meaning if you bend these cells, they will bend but not break. Okay, something like a rubber band. If you stretch it or you bend it, it will bend or it will stretch and it will not break. So these cells are present in parts of the plant which are bent or which have to change their space or location a bit due to different features like stem, leaf or branches. If a wind is blowing, the plant stem has to bend but comes back into its normal space when the wind is not there. So this kind of a structure you require Collenchyma. Okay, sometimes Collenchyma are green, very rarely they are green, uh, and they do photosynthesis whenever they are green. But the main function of Collenchyma is they provide strength and support and flexibility to plants. So, as compared to Parenchyma, they are longer in size, their cell wall is thicker, and they provide strength to the plant. Most of the time, they are living. Rarely you will find Collenchyma which are dead also. ओके, सो कोलेनकाइमा है. कोलेनकाइमा के सेल्स जो हैं वो लंबे होते हैं. पेरेंकाइमा गोल होते हैं, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं. इनकी सेल वॉल जो है पेरेंकाइमा के मुकाबले में थिक होती है और इनका फंक्शन जो है वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, ताकत देना है ताकि प्लांट खड़ा रहे, गिरे नहीं. लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जैसे रबर बैंड होता है उसमें स्ट्रेंथ होती है ना, उसको खींचे और लंबा हो जाता है लेकिन फिर नॉर्मल अपनी शेप पे आ जाता है. तो इसी तरह से कोलेनकाइमा के सेल्स जो है इनको आप मोड़िएगा, खींचिएगा, बेंड हो जाएंगे, लेकिन फिर जब छोड़ेंगे आप तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है. एक पतली सी ब्रांच होती है प्लांट की, उसको आप पकड़ के नीचे खींचते हैं और नीचे को आ जाती है, झुक जाती है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं वापस अपनी पोजीशन पे चली जाती है. तो उसके अंदर कोलेनकाइमा होते हैं. कभी कभी कोलेनकाइमा जो है ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. तो ये सेल्स लंबे होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये लिविंग होते हैं. Okay, based on shape, there are three types of collenchyma: angular, lamellar, and tubular. So this is a picture of a stem in which you will see just above the red colored portion
you will see some large cells which are longitudinally placed and they do not have too many intercellular spaces. These are collenchymatous cells. Okay, तो कोलनकाइमा जो है तीन तरह के हो सकते हैं, एंगुलर, लैमेलर, ट्यूबुलर. हम इन टाइप्स में नहीं जा रहे हैं. ये जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें सिर्फ आपको जो फर्स्ट टू लेयर्स हैं इसमें आप कोलनकाइमा देख सकते हैं. सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो है वो एंगुलर टाइप के कोलनकाइमा है और उसके नीचे जो है वो लैमेलर टाइप के लंबे लंबे कोलनकाइमेटस सेल्स हैं. ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि तीन तरह के कोलनकाइमा सेल्स होते हैं. So, since we are talking about simple permanent tissues only in this video, let's first see what are simple permanent tissues. Simple permanent tissues are differentiated cells which work together to perform one function, but they are similar cells. There is only one type of cell in this whole tissue. Sometimes you have different type of cells coming together and performing a single function, but not in simple permanent tissues. In some simple permanent tissue, you have a single type of cell, similar type of cells, but a group of cells coming together, okay, and performing a single function. There are three types of simple permanent tissues normally found in plants: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा सेल्स का एक ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चर में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और मिल के एक काम करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपके पास दो तीन तरह के सेल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं और मिल के पर वो काम एक काम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ सारे सेल्स का स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा, उनका ओरिजिन भी एक ही जगह से हुआ होगा और वो एक ही काम करेंगे. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप्स हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. Alright, so this is a picture of sclerenchymatous cell. The lower one is a transverse section, so you will see the cell. There's hardly any empty space. Small empty space is there in the middle. Rest the light green portion of the cell is the cell wall material deposited. There is no nucleus. There is no protoplasm. In the picture on top, on the left hand side, you will see some longitudinal cells like iron rods. So these are sclerenchyma cells. ये डायग्राम है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के. दो नीचे वाला जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है. ये बना लीजिएगा, आसान है बनाने में. और इसमें आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस दिख रहा है ना प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है. जो सेंटर में जगह दिख रही है वो बिल्कुल खाली है और आसपास जो लाइट ग्रीन मटेरियल है वो सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिटेड है इस सेल के अंदर. ऊपर अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे स्क्लेरेंकाइमा सेल्स दिखाए हैं. लंबे लंबे सेल्स हैं, जैसे सरिया डालते हैं हम बिल्डिंग में, उस तरह के ये स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स हैं. सरिये से स्ट्रेंथ आती है, पिलर को, बिल्डिंग को ताकत मिलती है. उसी तरह से स्क्लेरेंकाइमा सेल्स से ताकत मिलती है प्लांट के पार्ट्स को. Hello and good morning. So we are starting with a new video on types of tissues in plants. In this part of the video, this is the first section on plant tissues. In this part of the video, we will be dealing with the simple permanent tissues in plants. As normal, important points are marked in red. Diagrams are also given, so you can note down the important plants and the diagrams for future reference. So let's start with a video on simple permanent tissues in plants. तो ये जो हमारा वीडियो है ये प्लांट टिश्यूज पर है. इसमें हम एक टाइप का टिश्यू डील कर रहे हैं. प्लांट्स में एक टाइप का टिश्यू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो जैसा हम नॉर्मली करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दे आर मार्क्ड इन रेड एंड आप डायग्राम्स और इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं आगे रेफरेंस के लिए.
this is a diagram of fibers. As you can see on the left side, it's each of the fiber cell is an elongated cell with a small black portion in the middle, which is a pit where this lignin has not been deposited. Rest of the area is completely covered by lignin. So these are small elongated cells. तो ये डायग्राम है फाइबर का. लेफ्ट हैंड वाला डायग्राम जो है वो ज़्यादा क्लियर है. उसमें आप देख सकते हैं हर फाइबर जो पतला लंबा धागे की तरह है और उसमें जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रही है वहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुई है तो उसको पिट्स कहते हैं. और बाकी एरिया जो वाइट है उस पे सारे पे लिग्निन डिपॉजिट हो गई है. राइट साइड पे एक लंबाई में दिखाया गया फाइबर कितना लंबा होता है आप देख सकते हैं. ये लंबा सा फाइबर है रेड सा जो सिंगल दिखाया गया. तो ये डायग्राम बना लीजिएगा. So previously we talked about fibers which are elongated cells, thread-like cells, type of Sclerenchyma. Now the second type of Sclerenchyma are rounded cells like stones. These are called sclerides. Okay, they are normally found in gymnosperms, but of course you find them in higher plants also. These are short rounded cells with extremely thick walls. They are very hard. There are three types of sclerides. Brachysclerides, mango seeds are covered by these brachysclerides and pretty tough to break them. Now macrosclerides are even harder. The thorns of xerophytic plants or plants growing in deserts are made up of these macrosclerides. And last is osteosclerides. They are nearly as hard as our bones. This is the seed coat of walnuts or almonds are an example of osteosclerids. तो स्क्लेरिड्स जो हैं गोल होते हैं पत्थर की तरह और बहुत ही ज़्यादा थिक वॉल्ड होता है. इनके अंदर बहुत ज़्यादा लिग्निन होती है. ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं लेकिन एक्सक्यूज मी कभी कभी ये एंजियोस्पर्म्स में भी मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ओस्टियोस्क्लेरिड्स जो हैं सबसे हार्ड वाले स्क्लेरिड होते हैं. ये अखरोट का जो बाहर का कवर है या बादाम का जो कवर है जिसको हमें तोड़ के फिर खाना पड़ता है इस फ्रूट को, ये जो है ये ओस्टियोस्क्लेरिड के बने होते हैं. जो आपको रेगिस्तान में उगने वाले प्लांट्स पे कांटे मिलते हैं वो मैक्रोस्क्लेरिड्स के बने होते हैं. और आम जो है उसकी गुठली जो है वो ब्रैकीस्क्लेरिड से बनी होती है. तो तीनों टाइप के जो स्क्लेरिड्स हैं आप एग्जांपल से देख सकते हैं काफी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं. Just a diagram of sclerids which you can see. These are small rounded cells. The black portion is a pit where deposition of lignin has not taken place. Rest of the area is covered by lignin, making these small rounded hard cells. तो ये डायग्राम है स्क्लेरिड्स का. जैसा आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ ये जो छोटा सा काला सा पोर्शन है बीच में वहाँ पे लिग्निन नहीं है, वो खाली जगह है. ये भी डेड सेल्स हैं. स्क्लेरेंकाइमा सारे ही डेड होते हैं तो ये भी डेड है. जो काला सा खाली पोर्शन है वो एम्प्टी है. उसके आसपास जितना पोर्शन है उनमें सब में लिग्निन भरी हुई है तो काफी हार्ड सेल्स बनते हैं. ठीक है. सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन one type of tissue found in plants. Okay, permanent simple tissue. We are now left with permanent complex tissues which we'll cover in a separate video. Thank you.